हम सब अब साथ में आज शिबा मैम को वेलकम करते हैं फिर से। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अब जो भी है अब वो शुरू करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओवर टू यू शिबा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आप लोगों से बात करना। आई थिंक कुछ लोग डेफिनेटली लास्ट सेशन में थे मेरे साथ एंड जिन्होंने अब ज्वाइन किया है पहली बार। सो मैं KEI के साथ काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ और पिछले 3-4 साल से बोर्ड पे हूँ और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे टाइम मिल रहा है इंटरैक्ट करने का आप सब लोगों से और आपके साथ बात करने का और कुछ सिखाने का फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंस, और ये भी जानने का कि आप लोगों के थॉट्स क्या हैं, आप किस बारे में सोचते हैं और कौन से वो एरियाज है जहां आपको हेल्प की ज़रूरत है, जहां आपको जिन लोगों का एक्सपीरियंस है लाइफ में उनके साथ बात करके अपनी लाइफ के बारे में सोचने का जो मौका है वो मिलता है इन सेशन से। सो बिफोर आई स्टार्ट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये पेन आप लोग रिकग्नाइज कर सकते हो? आप चैट में लिखो अगर आपको इस पेन का नाम पता है। आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि अमेरिका में बहुत अच्छे पेन्स मिलते हैं, राइट? बहुत एक्सपेंसिव पेन्स होते हैं, रेगुलर पेन्स होते हैं, लेकिन ये जो एक पेन है, जब भी मैं कश्मीर जाती हूँ मैं एक पैकेट इसका खरीदती हूँ और वापस लेकर आती हूँ अपने साथ। इसलिए क्योंकि मैंने कॉलेज में जो ये पेन है, बहुत सस्ता सा पेन है ये, बट मैंने बहुत यूज किया है और मुझे आज तक बेस्ट राइटिंग इसी पेन की लगती है। सो आई डोंट नो ये अभी भी पॉपुलर है कश्मीर में कि नहीं, बट आई डोंट नो किसी को नाम पता है इस पेन का? चैट में लिखिएगा पता है। नहीं, प्राइवेटली नहीं, रेगुलर जो है एवरीवन। एवरीवन वाले में लिखो, आपने मुझे भी प्राइवेटली भेजा, तो एवरीवन को सिलेक्ट करके आप भेजो। क्लासमेट पेन, नो। रेनॉल्ड्स, देयर वी गो। गैलेक्सी J2 Pro, जो भी आप अपना नाम भी लिखो। डेफिनेटली दिस इज अ रेनॉल्ड्स फाइन टिप पेन, very inexpensive but I like it quite a bit. So लास्ट सेशन में हमने थोड़ी बहुत बात की थी, ये जो हमारे पास टाइम है इसमें इंट्रोस्पेक्ट करने का, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने का, अपने आप को जानने का मौका जो है वो हमारे पास है, इसलिए क्योंकि हमारी थोड़ी रूटीन डिसरप्ट हो गई है। आज मैं बात करना चाह रही थी हैबिट्स के बारे में, जो हैबिट्स हम फॉर्म कर सकते हैं as people that can help us in life, that can help us succeed, that can help us become leaders, that can help us lead an organized life. ये सब चीजें हैं, उन हैबिट्स के बारे में मैं बात करना चाह रही थी। और you know there is a saying कि you form your habits first and then the habits form you as a person. So जो आपके हैबिट्स हैं, स्पेशली जो अच्छी क्वालिटीज और हैबिट्स हैं जो आप फॉर्म करते हो, वो उसको आपको मे बी टाइम लगता है फॉर्म करने में, लेकिन फिर वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं एंड हेल्प यू बिकम अ successful person, an effective person, a more organized person, a more efficient person. So we'll talk about some of these habits. ये जो हैं ये यूनिवर्सल हैबिट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये एक सिचुएशन के लिए अप्लाई करती हैं और दूसरी के लिए नहीं अप्लाई करती है, या किसी एज के लिए अप्लाई करती हैं और दूसरी के लिए नहीं। ये बहुत यूनिवर्सल हैबिट्स हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जिनके बारे में शायद हम सोचते नहीं हैं इतना ज्यादा, लेकिन वंस यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट आपको समझ में आएगा कि ये हैबिट्स क्यों फॉर्म करनी चाहिए और ये कैसे आपको लाइफ में ये हेल्प करती है। अगर आप लोगों के पास पेन है या किसी चीज पे आप नोट्स ले सकते हो, तो मैं and I'm sure आपको most of these habits are taken from this book called The 7 Habits of Highly Effective People, जो आप लोगों के पास पेन ड्राइव्स हैं उसमें आई थिंक ये बुक लोडेड है, और उमर सर ने भी आई थिंक इसके लिंक्स भेजे हैं, तो वो भी आप रेफरेंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने फोन पे नोट्स ले सकते हो, सो आई वांटेड टू
you to type and remember these habits, because you'll come back to them time and time again. मैंने पहली बार जब मैं एक्सपोज हुई थी इस आइडिया के साथ कि ये 7 हैबिट्स जो हैं आपको अपनी लाइफ में अगर है तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जा सकती है, इफेक्टिव जा सकती है और अपने आप को आप सक्सेसफुल बना सकते हो, तब से कुछ 20 साल हुए हैं. एंड आई स्टिल गो बैक टू दिस यू नो व्हेन आई फाइंड कि मुझे ज़रूरत है अपनी लाइफ को थोड़ा और ऑर्गेनाइज करने की और थोड़ा सोचने की, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की और आगे के बारे में फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, then I sort of come back to it and think about what I can do. So the first habit is called be proactive. Proactive का मतलब है कि आप वेट नहीं करते हो दूसरे इंसान को अप्रोच कि आपको अप्रोच करे या किसी सिचुएशन को बेटर होने के लिए. आप जो है आप खुद वो इंसेंटिव लेते हो, आप खुद बोलते हो कि नहीं मैं ये करना चाहती हूँ, सो आई विल टेक अ स्टेप, राइट. जैसे आज आप लोगों ने यू नो जो ये लास्ट टाइम का सेशन था जो या 1-2 सेशंस में आप लोगों को इससे कुछ मिला, कुछ बेनिफिट आपको लगा. फिर बहुत सारे लोगों ने उमर सर को अप्रोच किया और बोला हमको और चाहिए. तो आपने प्रोएक्टिवली वो किया, आपने ये नहीं कहा कि अब हम वेट करेंगे कि अगला सेशन कब होगा, राइट. आप लोगों ने प्रोएक्टिवली कहा कि नहीं ये हमारे लिए अच्छी चीज है और हम ये करना चाहते हैं, राइट. सो दैट इज ये जो खुद आप अपनी कॉन्फिडेंस से या आप समझ सकते हो कि आपको आपके लिए क्या अच्छा है और उस चीज के लिए आपको पहला स्टेप लेना है. यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, नॉट वेट फॉर द अदर पीपल और द सिचुएशन टू बिकम समथिंग. यू आर टेकिंग दैट स्टेप. तो जब आप प्रोएक्टिवली सोचते हो, आप जो है ये सोचते हो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल और आई एम responsible for my situation or I can influence my situation, rather than कि ये situation जैसी है वैसी होगी और इसका इफेक्ट जो मेरे ऊपर है वो वैसा ही होगा और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या कुछ नहीं कर सकता हूँ. So that is taking a negative approach, a reactive approach to something. अगर आप proactive approach लेना चाहोगे तो then you will think अगर कोई situation खराब भी होगी, what can I do differently? मेरे पास क्या options हैं. सो आई एम श्योर आप लोग फेस करते होगे छोटी छोटी बड़ी बड़ी सिचुएशन जिसमें आपको लगता होगा कि ओ अब कुछ नहीं हो सकता है, राइट. एंड देन यू थिंक नहीं कुछ हो सकता है, मैं कोई और ऑप्शन यूज कर सकती हूँ, मैं कोई जैसे आपको एग्जाम के लिए फॉर एग्जांपल जाना है और आपके एरिया से कुछ बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट नहीं चला, तो आप ये तो नहीं सोच सकते उस टाइम पे कि मैं घर बैठो अब ये सिचुएशन हो गई तो मैं एग्जाम नहीं दे सकती हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टे होम, राइट. यू आर गोइंग टू थिंक प्रोएक्टिवली कि मैं क्या कर सकती हूँ एग्जाम हॉल पहुंचने के लिए. मैं किसी अपने नेबर की हेल्प ले सकती हूँ, किसी को फोन कर सकती हूँ, कोई ऑटो अरेंज कर सकती हूँ, व्हाटएवर यू कैन डू. सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड यू टेक दोस स्टेप्स. सो जब हम प्रोएक्टिवली सोचते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी लैंग्वेज को भी प्रोएक्टिव बनाएं. जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ प्रोएक्टिव लैंग्वेज की है I choose, I prefer. ये आप जो है ये choices कर रहे हो कि मैं इस situation में जो भी ये है I am not going to let the situation dictate. I am going to take my steps, use whatever I have to create an alternate situation जो इससे better होगी. जैसे आप रिएक्टिव लैंग्वेज अगर आपकी होगी आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ये सिचुएशन ही ऐसी है, या आई कांट डू दिस. अगर ओनली इफ ओनली दिस सिचुएशन वाज डिफरेंट देन आई वुड यू नो then it would be good for me. But if you think no, whatever the situation is, I am going to see what other options there are and I am going to take the first step and I am going to be proactive. That's a very important thing, being proactive. So I'm going to stop there, and if you have any questions, thoughts, अगर आपकी लाइफ में कोई एग्जाम्पल है जहां आपने proactively कुछ किया है that और आप शेयर करना चाहते हो, please go ahead and do so, या chat में या unmute करके.
मुझे लगता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरफेयर करूंगा। इनस्टेड के आप अगर चैट में करके मैं एक एक करके नाम पूछूंगा, वो अनम्यूट करके सबसे पहले नाइला, नाइला आप अपना एक पार्ट शेयर करो या क्वेश्चन शेयर करो या अंडरस्टैंडिंग शेयर करो, अपना अनम्यूट करके आप वो भी पूछ सकते, तब तक कोई अनम्यूट नहीं करेगा। या अगर आपको और मैं जो कुछ और लिखना भी समझाऊं चाहेगा क्लियरली लिखेगा, इसके हम बारे में। अनम्यूट करें। हाँ, उसके बाद सहरिश मुश्ताक आएगी, उसके बाद साबिरा मुजफ्फर आएगी। आप अपना अपना पूछ लीजिए, जो भी, मैं बस नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि नॉइज ना आ जाए। बाकी आप सारे लिख सकते हैं चैट्स में। आज सब क्यों इतना चुप है? चाय असल चाय में नहीं? हाँ। उनको शायद नींद से आज सवेरे उठना पड़ा। आज ज्यादा चलो। जल्दी उठना पड़ा इसलिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है। इफ यू कैन थिंक ऑफ अ क्वेश्चन लेटर, थोड़ा और हम बात करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो जो दूसरी हैबिट है, मैंने पहली हैबिट कही है बी प्रोएक्टिव, राइट? दैट वाज द फर्स्ट हैबिट। द सेकंड हैबिट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आप कोई भी काम शुरू करते हो, आप इंस्टेड ऑफ वो काम निपटाने के, आप ये सोचो कि उस काम का एंड रिजल्ट क्या है, जो आपका गोल है वो क्या है, एंड देन वर्क योर वे बैकवर्ड्स फ्रॉम दैट गोल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है बिगिन विद द एंड इन माइंड, दिस देन फोर्सेस यू टू थिंक कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है। और दो चीजें इसमें होती हैं। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मुझे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, डिजाइन होते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो हम जब उसके बारे में सोचते हैं अभी से कि अच्छा जी ये जो है एक ब्रिज बनाना है, ये ब्रिज होना चाहिए 2022 तक, जो है इसके ऊपर से ट्रैफिक चलना चाहिए, राइट? दैट्स द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड यू वर्क योर वे बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर, यानी से उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको डिजाइन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको परमिट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, एंड देन यू ले आउट अ प्लान ऑफ हाउ टू गेट देयर। तो ये तो कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात है। आप लोगों के लिए जो है, जो आपकी लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है, चाहे आप कोई ऐसा स्किल डेवलप करना चाहते हो जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, या आपको किसी जॉब या किसी करियर की एस्पिरेशन है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, या उस गोल को, वो भी जो आपका गोल है, यू यू जो उसकी तरफ जब आप स्टेप्स लोगे, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट गोल इन द एंड, राइट? एंड पे मुझे कहाँ पहुंचना है, और फिर उसके बारे में सोचकर देन यू मेक योर प्लान कि मुझे कैसे कैसे स्टेप्स लेकर उस जगह पे पहुंचना है और कितना टाइम लगेगा मुझे। इस चीज से क्या होता है कि आप अपना टाइम मैनेज करना भी सीखते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अच्छा चलो प्रोफेशनल व्हाटएवर के एग्जाम्स आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे देने हैं, तो उसका मतलब है आपको पढ़ाई कब स्टार्ट करनी, या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको फॉर्म्स भरने हैं, उस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, वो सब जो स्टेप्स हैं उसके बारे में आप पहले प्लान करोगे, पहले सोचोगे, तो उसका जो रिजल्ट अच्छा होगा। उसका रिजल्ट इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आपने सारी स्टेप्स प्लान की हैं, आपने अपना टाइम प्लान किया है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप किसी टास्क को और उस काम को खत्म करने के लिए आपने टाइम में थोड़ा बफर भी रखा है, राइट? क्योंकि आप कभी सोचते हो कि अच्छा ये इतने टाइम में मैं ये काम कर लूंगी, अगर आपने ये यू हैवंट स्टार्टेड विद दैट एंड गोल इन माइंड, एंड देन यू रन आउट ऑफ टाइम। What will happen if you think and plan, then you're going to take that into account. अच्छा, अगर मैंने इतनी देर पढ़ाई करनी है, बट लाइट चली गई या कुछ और हो गया, या मैं कहीं जा नहीं सकी, या मैं ट्यूशन पे नहीं जा सकी, तो मुझे कैसे वो जो है वो मेकअप करना है। So that is when you've thought about the end, and when you've thought about and you've planned it out, you're definitely going to end up with a better result. So इसमें जो है, जो आपका नजरिया है वो होना चाहिए कि एक होता है कि जी यू आर लिविंग बाय डिफॉल्ट, राइट? कुछ एग्जाम है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हो और आप चल रहे हो, और दूसरा है यू आर लिविंग बाय डिजाइन।
आप जो हो अपने गोल की तरफ कैसे पहुंचना है आप खुद डिजाइन कर रहे हो। जैसे आपकी कोई फ्रेंड पढ़ाई कर रही है या कोई आपका जानने वाला पढ़ाई कर रहा है, वो जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी एग्जैक्टली सेम हो। आपकी पढ़ाई की पेस डिफरेंट हो सकती है, आप किसी और चीज में इंटरेस्ट हो सकता है आपको, जिसके जिसके लिए आपको टाइम चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई और इंटरेस्ट हो। सो नो टू पीपल आर द सेम, and when they work towards a similar goal, they need to have their own personalized plan, right? And that personalized plan you can only get if you think about what your end goal is, and then you lay out a plan. You design, you live your life by design, not by default. ठीक है? Basically, we have some we have some questions. Dania ने पूछा है, what is an easy and proven way to build good habits and break bad ones? Yeah. So there's no easy way, I have to say, but the way to build good habits is do things routinely and do them every day. और मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि आप अगर अपने आप को किसी भी बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए या नई हैबिट को क्रिएट करने के लिए 21 डेज दोगे, 3 weeks, that's a good time to build a new habit and break an old one. Because जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन the best thing about human beings and human nature is adaptability, कि आप ह्यूमंस किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अभी अगर खाने की एग्जांपल लेंगे, जैसे रोजे होते हैं तो रोजों में आप एकदम से डिसिप्लिन हो जाते हो, राइट? और एक दिन 2 दिन थोड़ा चाय की तलब रहती है या खाना या थर्स्ट मिस करता है, मगर उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। बिकॉज ह्यूमन बींग्स बहुत अडेप्टेबल है, हमारा बॉडी, हमारी माइंड जो है इसमें अडेप्टेबिलिटी है, और यू कैन ट्रेन योर माइंड to think a certain way and to be a certain way, and that's the way you can form habits also. But ये है कि अगर आप किसी bad habit को break करना चाहते हो, पहले आपको अपने आप के साथ पैक्ट करना है। आप जरूर किसी की हेल्प ले सकते हो आपको सपोर्ट करने के लिए, किसी बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने साथ जो है पहले ठानना है कि ये बैड हैबिट मैं ब्रेक करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या ये जो है हैबिट आई हैव टू फॉर्म बिकॉज दिस इज गुड फॉर मी। एंड वंस यू डू दैट, then you do it every day. Then you practice every day of either the new habit or taking a break from the old habit. And I think it takes 2 or 3 weeks, and that's how habits form. How to make a daily routine for yourself. Daily routine for yourself, there's no magical way to do it. I think you have to start off with आप कितने बजे जागते हो, कितने बजे सोते हो, and then you make a list of things that you have to accomplish every day. And I would start with a weekly timetable, monthly timetable, जो भी है आपका, again taking into account what I said, what are your goals in the end जो आप accomplish करना चाहते हो, और उन सब goals का अगर आपको goal है कि आप obviously पढ़ाई करो इस एग्जाम के लिए, आपका गोल है कि आप घर में हेल्प करो, आपका गोल है आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ, या कोई और कोई आपकी जो है हॉबी है, वो है, ये 2 4 5 चीजें जो हैं वो आप उनके बारे में सोचो, यू राइट देम डाउन, and then you plan कि आपको there are only so many hours in a day or a week. So for example, if there's a hobby that you only want to do a couple of times a week, उसके लिए आप वो time बनाओ। अगर कोई पढ़ाई करनी है, obviously आपको everyday करनी है, आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि मैं इतने बजे जागूंगा, इतने बजे जो है पढ़ाई करूंगा, और इतने बजे ब्रेक लूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करूंगा, इतना टाइम अपने आप को दूंगा to relax, to do something healthy, to walk, to exercise, etc.
And once you get into the habit, then you know you don't always have to write it down, but that's how you should plan your weeks, and then plan your months if you're working towards exam or entrance or कोई ऐसी चीज जो है. So बिलाल अहमद ने एक सवाल पूछा है, हाउ डू हैबिट्स इन्फ्लुएंस पर्सनल ग्रोथ. बिलाल, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि जो आप पहले हैबिट्स फॉर्म करते हो, फिर हैबिट्स जो है वो इंसान को फॉर्म करता है. अगर आप अच्छी हैबिट्स फॉर्म करोगे, आप यू आर गोइंग टू आपकी लाइफ जो है वो इतनी हैपहैज़र्ड नहीं होगी. आप हर एक चीज के बारे में सोच के प्लान करके करोगे, and what it's going to do is going to free you from the daily जो है टेंशन और एंजाइटी जो क्रिएट होती है, वो इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप अपना गोल हासिल नहीं कर सकते हो, या आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है. अगर आप अपनी हैबिट्स फॉर्म करोगे तो आप जो है बहुत एफिशिएंट बनोगे, and because of that then you'll accomplish those goals. अगर आप सुबह उठ के बोलोगे किसी गोल के बगैर, आप बोलोगे जी मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ, this is the only thing you're going to say to yourself, then you're going to open your book and read a little and then you're going to get bored or whatever. अगर आप गोल के साथ उठोगे कि आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है और इसके बाद ये क्वेश्चंस करने हैं और फिर मैं कल इसको रिवाइज करूंगा, if you break it down into these little goals, then you're going to be able to accomplish them, क्योंकि आपने अपने लिए जो है कोई टारगेट क्रिएट किया है. अगर आप जो हो वो स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करते हो, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपकी कोई हॉबी है, चाहे आप वो जो भी चीजें कर रहे हो, that structure is very important. एंड इन द एंड जो आप लोग सबको समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बोलते हैं, इन द एंड ये जो है दिस इज फॉर यू, एंड पर जो इस सारी चीजों की अकॉम्प्लिशमेंट है वो आपके लिए है. सो द पर्सन यू शुड बी आंसरेबल टू मोस्ट इज योर सेल्फ, एंड यू हैव टू जज योर सेल्फ कि आज जो आपने गोल्स अपने लिए सेट किए वो आपने अकॉम्प्लिश किए या नहीं किए. एंड इट्स नॉट कि आपको हर दिन वो गोल अकॉम्प्लिश करोगे, नहीं, कोई ऐसा दिन होगा जब आपकी पढ़ाई की एनर्जी की लेवल्स बहुत ज्यादा होंगी, आप बहुत अच्छा पढ़ सकोगे, कोई ऐसा दिन होगा जब वो नहीं होगा. लेकिन अगर आपने ये प्लान किया है तो आपको उसमें आपने वो चीजें भी कंसिडर की होंगी कि हाँ हो सकता है आज मैं पढ़ूं, कल मुझे किसी की शादी अटेंड करनी है, नहीं पढ़ सकूंगी मैं, तो आज मैं ज्यादा पढ़ूं. अगर आपने इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है तो आप अपनी लाइफ में जा रहे हो हैपहैज़र्डली, तो वो फिर आप वो टाइम शायद ये जो है नहीं कर सकते हो वापस, बिकॉज आपने ऑलरेडी you've kind of moved from one activity to another without thinking so much. So that's it's very important to plan and to stick to that. Why is man, am I reading the right question, Umar, or इसके ऊपर भी कोई question है? नहीं, उससे पहले है एक some 2 years back, ये ओसिया ज़हूर ने पूछा है, some 2 years back I was preparing for competitive exam and always used to dream about it. Started thinking of end results only. This ended me up in mental anxiety. When I was dropped in the mains exam, therefore I started enjoying the preparation for the exam, then thinking of results. Your comments, please, ma'am. Yeah. So what you're describing, Ossia, is very normal. At your age, this is sort of the biggest goal you have, right? Exam, dena, competitive exam, etc. This sort of defines your life at this stage. So, कुछ level of anxiety जो है वो बहुत normal है. And जो ये है, जैसे मैंने पहले बोला ना, begin with the end in mind. The end is not exam देना. The end result is उस competitive exam में अच्छे number लाकर seat हासिल करनी, right? So that is your goal. So instead of then just preparing for the exam without really thinking about कि इससे आपके marks अच्छे आएंगे
जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, या आपको कुछ और करनी, आपकी कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो नॉलेज होती है आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, चाहे मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, बहुत अच्छी होती है। आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह आती है, और भी जो भी फिजिक्स वगैरह का, वो बहुत अच्छी तरह आती है। फिर आप जब एग्जाम देने जाते हो, फिर एग्जाम अच्छा नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल जो आपने आज तक एग्जाम्स दिए उनसे बहुत डिफरेंट होता है। So a lot of being successful in competitive exams is learning how to take the exam, right? Learning this structure of the exam, learning जो उसका format है वो बहुत different है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, लाइक वी हैव 300 क्वेश्चंस, यू ओनली हैव एक्स नंबर ऑफ मिनट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो प्लानिंग है, ये आपको बहुत अच्छी तरह करनी है। कि ये नहीं है कि आप बुक लेकर जो है बायोलॉजी की बुक लेकर आप पढ़ रहे हो एंड you know the subject really well, but when you get there you're not as successful because you're not as familiar with the exam format. So you need to practice that again and again, and you need to think about it कि ये एग्जाम है, इसमें इतने क्वेश्चंस होंगे, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये आपको पहले ही सोचना अपने साथ कि मैं उस क्वेश्चन पे कितना टाइम जो है स्पेंड करूंगी। मैंने बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए हैं और ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स लिए हैं, और यू हैव टू थिंक अहेड कि अगर मुझे नहीं आया कोई क्वेश्चन, मैं इतना ही टाइम है, मैं अपने टाइम में से कितना उसको जो है मैं उस पर टाइम कर सकती हूँ यूज, एंड you set a deadline or you set a certain amount of time for yourself कि वो आप exceed नहीं करोगे। Because if you start to look at it, अगर आपने बोला कि मैं इस पे 2 मिनट देखूंगी उन questions को जो मेरे लिए difficult हैं, and then I'll move on, अगर नहीं हुआ you just circle one and move on. If you don't set that with yourself ahead of going to the exam, आप उस question को देखते रहोगे, उसको solve करने की कोशिश करोगे, 20 मिनट उसमें जाया करोगे, and then then you'll have no time left for the questions that you know very well and you could have done very well. So very, very important to organize, to plan, to think. Do you want me to read out another? Or No, I reading can actually read. So the next one is, I just want to make sure मैं किसी को skip नहीं कर रही हूँ. सीरत शाबान का next है. Yeah. Is it possible that we can make a good habit in a week, or we can break a bad habit in a week? No, I think if it's a habit, it means that this is something that you're used to doing all the time, right? तो उसको break करने के लिए आपको अपने आप को time देना है. So if you can't break a bad habit in a week, don't get disheartened. If you can't form a good habit in a week, you shouldn't get disheartened. Like I said, human beings, we all are very adaptable, but we need to give ourselves time. हर एक चीज के लिए आपको थोड़ा time देना है. तो एक वीक तो बहुत कम है. आई थिंक जैसे मैंने कहा 2-3 हफ्ते, क्योंकि पहले एक वीक में your two habits are sort of struggling with each other. You're used to doing something a certain way, and then you're introducing a new thing, right? And so that पहला वीक उसी struggle में ही चला जाएगा. Next week जो है, I think you're going to, the good habit that you're forming is trying to overcome the bad habit that you have. And in the third week, you start to establish that habit. So give yourself at least 3 weeks to form or, give up a bad habit or form a new good one. Sarish Mushtaq, at times we plan something. At times we plan something, example, we make a timetable at times, but we sometimes fail to do accordingly to the timetable. We should do to make ourselves committed. How do you make yourself prone to a certain habit in your timetable effective as well? So yeah, like I said, Sarish, you make timetables and you try to follow them as best as you can, but there are going to be times, there are always कोई जो चीज आपने प्लान नहीं की है वो हो जाती है. But
you have to see that if अगर किसी दिन आप वो accomplish नहीं कर सके, right? या कभी ऐसा होता है कि आपने कोई चीज प्लान की है, चाहे आपने पढ़ाई का टाइम टेबल प्लान किया है और XYZ चीज की वजह से आपकी पढ़ाई डिसरप्ट हो जाती है, आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है या कुछ आपको कोई और काम पड़ गया या कुछ है, तो कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन निकल जाते हैं. बट इट इज इम्पोर्टेंट टू से उन 3 दिन के बाद अब तो ये टाइम टेबल जाया हो गया, अब मैं व्हाट कैन आई डू. You have to come back and you have to try and do a little bit each day to make up for the time that you've lost. And ये और ऐसा नहीं होता है कि आप ये टाइम टेबल्स बनाओ और आप अच्छी हैबिट्स बनाओ और आप परफेक्ट हो जाओगे, वो नहीं होता है. बट यू हैव टू ट्राई वेरी हार्ड टू स्टिक टू स्ट्रक्चर and you have to try very hard to plan ahead of time. You have to try very hard to understand what you can accomplish as a person in a day. और आपको अपने लिए जो चाहे डेली गोल्स हैं या वीकली गोल्स हैं, वो आपको रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलोगे कि मैं ये सारा एक किताब पूरे हफ्ते में कर लूंगी, या आपकी कोई फ्रेंड कर रही है कोई काम इतनी देर में या पढ़ाई इतनी देर में, मुझे एग्जैक्टली वैसे ही करना है. थोड़ा कंपटीशन अच्छा होता है और थोड़ा सीखना अच्छा होता है कि दूसरा इंसान क्या करेगा, बट जो आपका अपना प्लान है वो यू हैव टू टेलर इट टू योरसेल्फ, your capability, your commitments, and then achieve it that way. So Galaxy, आप अपना नाम जरूर लिखे. मैं आपको Galaxy बुला रही हूँ तब से. I'm sure you have a very nice name and it's not Galaxy J2. Ma'am, why do we take so much time to leave our bad habits as compared to adopt good habits? I think that's just human nature. It's not that there's something, God forbid, lacking in a person, or it's just human nature. Human beings take an easy way out, and if you आपने कोई habit बनाई है, you're used to it, तो easier है कि आप उसी bad habit के साथ रहो, right? क्योंकि आपको कोई अपने आप को change नहीं करना है. मगर अगर आपको कोई habit change करनी है, तो you have to put yourself through some pain, right? And nobody likes that. So what you have to keep reminding yourself is कि इस bad habit को तोड़ने के लिए आप obviously इस bad habit को तोड़ रहे हो because you know in the long run वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं है, right? और आप good habit form कर रहे हो इसलिए क्योंकि आपको पता है in the long run वो आपको benefit करेगा और आपके लिए अच्छा होगा और आपके लिए जो है उसमें ज्यादा आराम होगा in the end. मगर वो इजीली ब्रेक नहीं होती है बिकॉज ईजियर होता है कि आप वही जो है बुरी हैबिट्स के पीछे रहो, और जो वो ट्रांजिशन होता है वो कि जो आप अच्छी हैबिट फॉर्म कर रहे हो वो फेज थोड़ा मुश्किल होता है. सो आई थिंक पीपल गिव अप वेरी इजीली. सो यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि आपको टाइम लगेगा. It is always going to take time to form a good habit. It is always going to take time to get rid of a bad habit, and you have to tell yourself that overnight koi cheez change nahi hoti hai, but you have to stay committed and you have to keep trying. So how much time? I told you guys before, give yourself at least 3 weeks, if not more. How are commitments and habits related to each other? Please highlight. So commitments and habits, the way they're related to each other is that I would say obviously if you're committing to something and you have to accomplish it within a certain period of time, or you've promised something to somebody, if you have good habits, and if the few things that we talked about, then you are more likely to succeed in honoring that commitment than if you are not as disciplined as a person. And so that is what I would say कि उसकी relationship है.
Can we prepare for any competitive exam in the last 2 months if we couldn't prepare for some reason? So Misbah, जैसे मैंने आपको बोला, yeah, it seems like, okay, this is a very difficult situation, and I don't know how anyone would have got to that situation. मगर आप, if you are in that situation, if you're going to be reactive, if you're not going to be proactive, you're going to say, this is impossible. This is that situation. If only I had started 6 months ahead of time, now I can't do anything. There must be options. If you've studied enough, if your concepts are clear, and all it's going to take you is to learn how to take that exam and be comfortable with that format of that exam, then yes, anything is possible. Like I said, human beings can achieve anything. What you have to do is commit to yourself, and you have to say that you are going to study hard and practice hard and do this day in and day out. Absolutely, it is possible. How do habits influence personal growth? The way habits influence personal growth is that you are more in control of yourself. You are, like I said, you are designing your own life when you form good habits. You're not leaving things to chance. You're not letting situations dictate. What you are doing is taking control of your own life. And that helps you grow as a person. आपका जो influence है उससे grow होता है. जो आप अपने आप को with good habits, not only can you influence yourself and achieve personal growth, if you have good habits, then you can influence other people with that as well. So that is another way of achieving personal growth as well, becoming an example for somebody and being able to take your good habits and have someone else learn from that and be able to help someone else form those good habits. That helps you grow as a person as well. What is the best way for us to create a good and prominent habit in life? Like I said, you have to make a pact with yourself. You have to understand why you are forming this particular habit. You're not forming a particular habit just because XYZ person, your friend, did or is doing the same thing. आपको अपने साथ बोलना है कि इस चीज से मुझे क्या मिलता है, ये चीज मेरे लिए क्यों अच्छी है, मुझे ये हैबिट क्यों फॉर्म करनी है. फिर आपको अपने साथ कमिट करनी है कि ये जो है मेरे लिए अच्छा है. And even if it's going to be difficult for me for these weeks or months or whatever, when I'm forming this habit, I'm going to stick with it. So that's very, very important. And that's the best way to create it. You can have somebody help you. Just say a lot of people weight lose karna hai, just say, to get a healthy lifestyle, exercise or eating healthy. ये आपको accomplish करना है. ये आपको अपने साथ पैक करना है that this is what you're going to do. But you can always have your family help you with this. कि मैं जी अपनी life में ये change कर रही हूँ, I'm going to eat healthier, I'm going to exercise more. But then you can always have your friend or your family help you, जो आपको वो उन commitments की तरफ help करेंगे to stick to them. But the most important thing is कि आपने अपने आप को convince किया है कि नहीं. If you have convinced yourself that this is what I want to do and this is what I'm going to commit to, that's going to be the most important thing. फिर आपको बाकी लोग जो हैं वो help कर सकते हैं, वो support कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा important है कि आप अपने आप को पहले जो है वो you make a pact with yourself and then you honor that pact with yourself. Sometimes students fail in competitive exams. The result of their motivation is down. People around you start to taunt you, which results in depression also. How to boost up motivation in those times and get rid of depression? So, Sarish, I think, you have to, I mean, I'm sorry to hear that anyone would taunt you if you're not doing well in exam. I don't think anyone should do that. I feel sorry for anyone who's doing that and is trying to make you feel bad about it.
तो पहली बात तो जैसे लोग हैं जो आपको टॉन्ट कर रहे हैं, I don't think you should pay any attention to that. You should let their comments or whatever they have just, you know, not hurt you. And the thing is that to not be depressed about it is, no one is successful all the time, right? No one is successful all the time, and roadblocks hote hain life mein, ya there are failures in life, and the best lessons you learn in life are the lessons that you learn from failure. So competitive exams are tough, and they are also, there is a lot of competition. You know, there are only a certain number of seats, and 10 times the number of seats are, the people appear for those exams, so there's a lot of competition. So it's a tough situation to begin with, and you have to you have to ask yourself, आप इस एग्जाम के लिए, लाइक अगर आपका गोल है मेडिकल कॉलेज में जाना या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, आप अपने आप के लिए सेट करो कि मैं इतनी ट्राइज में जो है मैं अपनी लाइफ के 2 या 3 साल, कुछ लोग बहुत और भी साल देते हैं जो आपको लगता है रीजनेबल अपनी लाइफ के, that I am going to try this for 3 years or 2 years or whatever it is, and give it your best. You may have a failure the first time, then you have to learn ki aap kyun, why did you fail? Was it because a particular subject you didn't study very well? Was it because of the format of the exam? Was it because you were too anxious before the exam? उस फेलियर को जब तक आप उस फेलियर को एनालाइज नहीं करोगे, आप जो है उसके बारे में सोचकर डिप्रेस्ड रहोगे कि ये हुआ वो हुआ, मैं नहीं कर सकती हूँ. So the best thing to do in that case would be to take that failure and analyze it down to as much detail as you can, and then take that detail and learn for the next time. So अगर आपका failure था कि आपका time कम था exam में, then you learn then you learn and practice speed. If it was a particular subject that you did badly in, then you tend to spend some time studying that subject. Tutors कर सकते हो आप उस सब्जेक्ट के लिए, या किसी और का जो अच्छा उस सब्जेक्ट में आपकी फ्रेंड है, कुछ है, उससे आप पढ़ सकते हो, एंड उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो. So every failure is an opportunity to learn, and every failure teaches you something, and the next time around you're going to do better for sure. I've left one question unnoticed. I'm very sorry. Whose question? Akif Bhatt's question. Akif, please, आप अपना, मुझे मिल नहीं रहा आपका question. आप please फिर से type करोगे? Sorry. Every time when I try to make very good habits of offering salah, I always followed it for only some weeks. Yeah, I mean, this is something that you should, you should figure out why. Why is this habit breaking? And like I said, you should think about it. किस लिए, क्यों habit ये break हो रही है जब आप form करते हो? Time की वजह से आप सुबह जाग नहीं सकते हो, आपको जल्दी नींद आ जाती है, या ठंड होती है, आप वुजू नहीं कर सकते हो. So try to think about it, and then and I would say, don't do it with the mindset कि आपको ये करना है. आप do it with the mindset कि आप किस लिए कर रहे हो. आप अपने लिए कर रहे हो, अपने spiritual self को अपनी spirituality को time देने के लिए कर रहे हो. जब आपके दिमाग में वो गोल क्लियर हो जाएगा कि कैसे नमाज पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, उसके बारे में सोचोगे आप, तो फिर you can try to form a habit again, and inshallah you'll succeed. Why it takes slight chance to indulge in bad habits and a detriment willpower, hard efforts to cultivate a good habit. This is very similar to the other question Akif jo maine bola tha, because
you know, like I said, it's easier for us to stick to bad habits. It's easier to stick with what you know already. Every time you have to adapt, जो वो period होता है आपकी adaptability का, वो मुश्किल होता है. That is difficult. You're putting yourself through, you know, tough, something tough, and it's easy to, you know, fall back into bad habits because those are easier. But like I said, I think all these, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आप accomplish कर सकते हो. You just have to keep at it. लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो important बात है, you have to understand the why of the habit. If you don't understand why you are doing it, if you don't understand why it is beneficial to you, and you're just doing it because someone else is doing it, then it's not going to, because everybody is different. तो जब तक आप वो समझोगे नहीं कि आपके लिए particularly ये habit give up करना क्यों ज़रूरी है, और आपके लिए एक नई हैबिट फॉर्म करना क्यों ज़रूरी है, उसमें आपका क्या फ़ायदा है, you know, उसका आपका क्या बेनिफिट है, वो जब आप समझ जाओगे, फिर विल पावर जो है उसी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप इसलिए हैबिट फॉर्म कर रहे हो क्योंकि किसी ने बोला ये अच्छी बात है करना, शायद आप 1-2 दिन के लिए करोगे, then you're going to fall back into it because you have not convinced yourself. सबसे मुश्किल चीज़ हैबिट फॉर्मिंग में है कि आपको अपने आप को कन्विंस करना है, right? So that is important. I think if you convince yourself, and before starting on this new path of either giving up an old habit or a new one, you think about it clearly and not just rush into it. And I'm sure, you know, that way you can make your willpower strong. And हर एक चीज को accomplish करने के लिए थोड़ा बहुत discomfort जो है वो सबको bear करना पड़ता है. So you have to tell yourself ये short-term discomfort hai till you're getting used to something, and once this discomfort is over, you're only forming this bad habit because you know something good is going to come out in the end. There's Fayaz ne ek link bheji hai on how habits work. I'm going to send it here. Oh, I think I sent it privately. I have a couple of messages. मैं पढ़ूंगी वो. Is failure always bad, or could it help us create a good habit? I just mentioned to you, failure is not bad. Everyone fails. And if you look at the most successful people in the world, they have they have so many failures before they get anywhere. And every failure is a learning experience, but it's only a learning experience if you sit and analyze that failure, and if you know why you failed. You know, there are some things कुछ circumstantial चीजें होती हैं, मगर कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके influence में होती हैं या आपने करनी होती हैं, जो which you did not do as well, or were not able to give it enough time, etc. Whatever it was, you need to analyze that failure, and then the next time you set out to do the same task, you will have the knowledge of what went wrong the last time, and you would have overcome that. So don't think, and like I said, everyone fails. It is not a terrible thing to fail. उस moment के लिए आपको लगता है बहुत disheartening, that failure, but you know, life is really very long, and you're going to experience so many different things. And if you feel aapke koi chote test mein failure hai, that's the end of life. It is not. It's a very small piece right now in what you have to do. The best thing is to pick up yourself after a failure. That's the best thing to do, is not let yourself get down, be depressed. You have to pick yourself up and tell yourself you're going to do it better, and you're going to learn from that experience and move forward that way. Think very positively. All right. So I think Umar, मैंने सारे ये वाले questions जो हैं वो answer किए हैं. Okay. So let's talk about दो habits के बारे में मैंने बात की. एक थी be proactive, and the second one was begin with the end in mind. And
the third habit that I want to talk about, and this is ये मेरा personal failure है इस particular habit के साथ जो मुझे बार-बार जो है वो I have to come back to it and tell myself that this is a really good habit to form because this really helps you get organized in life. And this is the third habit. It's called put first things first. इसका मतलब ये है कि जो important चीजें हैं life में, those are the things that have to come first. There is human beings में जो एक ये है कि हम we are all sort of what I call is slaves of the urgent. जब कोई urgent चीज आ जाती है, there is something about that makes us react to it because human beings are very reactive. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है आप किसी important चीज पे काम कर रहे हो and there are a number of urgent or unimportant things that come up. मगर आप अपना important चीज जो को छोड़कर उन्हीं urgent चीज के बारे में उसमें लग जाते हो because you think if something is urgent, if it's आपको किसी ने WhatsApp पे मैसेज भेजा, आपको किसी ने ईमेल भेजा, आपको किसी का फोन आया और आप जो है कोई इम्पोर्टेंट चीज कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या कोई टेस्ट कर रहे हो और आप अपने आप को बोलते हो ओ ये तो बहुत अर्जेंट है, ये किसी ने मैसेज भेजा है, इफ आई रिप्लाई बैक टू इट बस ये हो जाएगा फिर मैं आई विल कम बैक टू इट. और प्रॉब्लम ये होती है कि जो वो अर्जेंट टास्क्स हैं वो चलते रहते हैं एंड दे टेक अप मोस्ट ऑफ योर टाइम. और फिर जो इम्पोर्टेंट टास्क्स हैं जिसमें आपको टाइम लगना चाहिए, जो आप लॉन्ग टर्म चीजें करते हो, उनके लिए टाइम बहुत कम रह जाता है. सो द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ suffer because you're always responding to urgent and unimportant things. So there is an example of this. जैसे आपके पास एक this a lot of people talk about it. If you have a big glass jar और उसमें आपको डालने हैं बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर और सैंड, राइट? अगर आपने पहले उसमें सैंड डाल दी, फिर ऊपर छोटे पत्थर डाल दिए और फिर बड़े पत्थर डाल दिए, you will see that बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं होगी. So the urgent and unimportant things in life are like sand and the small pebbles. You have to put the big things, जो बड़े पत्थर हैं वो आपको अपने ग्लास जार में पहले डालने हैं, important things. फिर जो उसके बाद है आपके जो हैं unimportant things, जो छोटे छोटे pebbles हैं, वो अगर आप उसमें डालोगे वो उन गैप्स में चले जाएंगे जो उन रॉक्स के बिटवीन है. और फिर जो अर्जेंट चीजें हैं और अर्जेंट एंड अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं, that's like sand and you pour it in that container, the sand is going to fill it up and you can then accommodate all of these things. लेकिन अगर आप हमेशा अर्जेंट चीजों और अनइम्पोर्टेंट चीजों के पीछे रहे तो डेफिनेटली जो है फिर आपकी लाइफ में और आपकी माइंड में कैपेसिटी नहीं रहती है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपकी लाइफ में. एंड यू शुड सिट डाउन एंड राइट डाउन what is important for you. Your studies are important, your good habits are important, your health is important, exercising is important. All of these things that are important to you, you write it down and you have to tell yourself that most of my time is going to go to these tasks. There are other tasks, of course, you chat with your friends or whatever it is, but it is unimportant, and a lot of times it gives you this feeling that it's urgent, but it's not, because this is the new sort of IT and texting world, and if a text comes in, it comes in with an alert and you think, oh, I have to respond to it. Magar wo important nahi hai. There can be an important text which you have to respond to, but most of the time our lives are filled with just wasting our time with this. And ye ek jo important ye habit jo hai, ये मैं पर्सनली बहुत स्ट्रगल करती हूँ, कि इसको ईमेल्स को भी आंसर करो, टेक्स्ट को भी आंसर करो, फिर जो है इम्पोर्टेंट चीजों के लिए टाइम बहुत कम रह जाता है. सो ये बार बार अपने आप को वापस लाना पड़ता है डिसिप्लिन में ये करने के लिए. सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? अपने लिए आप जो है ये जो है you have to tell yourself, write and make a plan for yourself and say, what is the most important thing for me? What are the important things that I have to accomplish in a day, in a week, in a month, in a year?
and then tell yourself that मेरे time limited है और precedence जो है मैं important चीजों को दूंगी, not unimportant things, right? Excuse me. How can we differentiate between an unimportant task and a very important one? So unimportant tasks can be, like I said, often, like I said, a lot of urgent tasks are sort of feel like they are important, right? Like I said, replying to a text, replying to an email, or watching way too much TV, for example. That's an unimportant task. It's a task that you can do without. I think the way you can decide ये आपके लिए important है या नहीं है is, again, you have to have your goals in mind. आपको क्या करना है, आपका month का plan क्या, आपका day का plan क्या, आपका week का plan क्या है. और अगर आप जो करने जा रहे हो, it is helping you go towards your goal, then it's obviously an important task, right? If it's not helping you, if it's coming in the way of your goal, then it's not an important task, right? That's something that, or and again, recognizing urgently क्या करना है, नहीं क्या करना है, अपने day को कैसे divide करना है, बहुत different चीजें करनी होती हैं दिन में. But if you plan your time, you'll be able to attend to your most important tasks, and then there might be some unimportant tasks that you want to do, but जो आपका prime time है वो उसमें नहीं जाता है. Sometimes our good habits break due to some reason, and then it becomes difficult to rebuild them. What to do at that time? Yeah, this happens very often, Ruxana, कि आपने कोई बहुत मेहनत से कोई बहुत अच्छी habit form की, और कभी अपनी वजह से, कभी circumstances की वजह से जो है, especially if you were just about forming that habit and it was becoming a part of you and it got disrupted, तो वो break हो जाती है. The thing is, again, I said, go back to why. Why do you want to do this? The why is very important. And once you answer that question कि ये habit आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको life में जो है either success की तरफ ले जा रही है, अपने goals की तरफ ले जा रही है, या कुछ बहुत अच्छा करा रही है अपने लिए, अपनी family के लिए, then you will convince yourself कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, and then you'll definitely go back to try and rebuilding them. And again, it's not going to be easy, but you will be able to go back to it and build it back again. And ये अगर आपको वो उस habit को form करने में पहली बारी में 4 weeks लगे हैं या 1.5 महीना लगा है, next time जब वो break हुई habit आपको उतना time नहीं लगेगा, because you would have learned from the first time. You would have adapted the first time around. So the second time it's going to be easy, but you have to commit to yourself and you have to form that habit. Okay, I think I wanted to go over all these 7 habits today, but I don't think we'll have time for that. I'm going to do one more that I like very much, and then we can have, if you guys want, we can have another session for this one. Actually, there are quite a few that I like, but I think I'm going to do this one first. This habit is called seek first to understand, then to be understood. I think for people who जो leaders हैं, एक common चीज जो बोलते हैं जो leaders में होती है या जो is not just success and all that, it's also emotional intelligence. That people who are leaders are emotionally intelligent people. That means they're confident in their own selves, and they give other people space, which is very, very important. So the leader is not just just leading someone and just worried about themselves being a leader, but they are leading a whole lot of people, and they are they have empathy for them, they have emotional intelligence for them. So you seek first to understand, then to be understood.
इसका मतलब ये है कि आप जब किसी से आप बात करते हो और आपकी कॉन्वर्सेशन किसी से हो रही होती है, तो आपके दिमाग में ये होता है कि मैं इस इंसान को इस जो बात हो रही है उसका जवाब दूंगी, या वो होता है कि मैं सुनूंगी. आई एम गोइंग टू सीक टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू से. If you're in this mode all the time when you're thinking about कि मैं जवाब क्या दूंगी या मैं जवाब क्या दूंगा, rather than मैं इसकी बात सुनूंगा और understand करूंगा, तो वो जो है that is sort of this difference कि आप पहले जो है किसी को understand करने की कोशिश करो, फिर आप उस बात का जवाब दो या उसके बारे में बात करो. एंड ये यूजली बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज even if you are family or your friends, you are going to have disagreements and you're going to have difference of opinion, and it's good to have difference of opinion. And usually difference of opinion बहुत सारी चीज़ों पे होती है. Politics पे difference of opinion होती है, लोगों की religion पे हो सकती है difference of opinion, yeah, how you accomplish certain things, how you behave, how you do. बहुत सारी differences of opinion होती है. But what is important is that you respect that and you are able to discuss it without that affecting your personal relationships with people. And the only way you can do it is that when you are in a debate or an argument with somebody, you have to do it with respect, and you always have to keep your mind and your ears open, and you have to understand them. यहाँ नेटिव अमेरिकन या अमेरिकन इंडियन कल्चर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी. जो वो ट्राइब्स होती थी उनके पास एक स्टिक जैसी होती थी जिसको बोलते थे टॉकिंग स्टिक. सो जब डिबेट होता था उस जमाने में 100 साल 200 साल पहले whatever, तो उनके ट्राइब्स में या ये कल्चर था कि the person who has the talking stick is the only one who can talk and everyone who has to listen. And once the person is done talking, then that stick would go to another person, and the one who was holding the talking stick would hold it and would carry on the main conversation and talk, and everybody would seek to understand what that person is saying. And why they had to do it that way is because it's human nature, right? हम जब debate करते हैं, हम argue करते हैं, we want to put our point across. It's very important. Or in that, what we negate is the whole purpose of this debate, because it is good to have difference of opinion, because आपका किसी चीज के बारे में opinion जो form हुआ है वो आपके personal experiences से form हुआ है, किसी और का opinion उनके personal experiences से form हुआ है. So you may have an opinion that is tainted, so it's very important to listen to the other person and understand them. And you may not always agree with them. You can, agree to disagree with them, but it's very important to listen, because only then, ये जो diversity of thought है, ये बहुत बहुत important है कि आप हमेशा वही बातें नहीं सुनो कि जो आपके साथ जो है आपकी thinking के साथ aligned है. जब आप कोई अलग बात सुनोगे तो आप उसके बारे में सोचोगे, and then you can make a judgment call कि वो आपके लिए अच्छी है या बुरी नहीं है, or if you should pursue it or not. But the important thing is that you understand it. There was a very nice thing that I had read in this about what Native Americans said is that if there's don't speak so much that your tongue makes you deaf, right? That agar aap hamesha bolte rahoge and without trying to understand what the other person is trying to tell you, you're not going to absorb. You're not going to absorb good or bad things or differing opinions that can help you in life. So that's another habit that I think is very important to form, whether you are talking to your friends, you're talking to your family, you're talking to strangers, you're talking to people who have a difference of opinion. Keep your mind open and seek to understand the other person, not just debate for the sake of debating. Okay.
Let's see. Anna Maftab. Oh, sorry. How do we handle tasks that are important to us and those that are given to us by others, like our parents? I usually struggle with what to do first, and then I decide. The second one keeps snagging at my subconscious. Yeah, I think we're obviously for us, whatever our parents ask us to do. Even now, I'm at this age, if my parents ask me to do something, I usually think that that's the most important. I think I should do it right away. But again, you have to think about it. If your mom's asking you to wash clothes when you're in the middle of studies, you have to maybe talk to her and say कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ. Is it okay if I do it uh, after I finish this? आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो कम्युनिकेट करना एंड अंडरस्टैंड करना. हो सकता है कि कोई उनका टास्क जो है वो बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट हो और आप ही हो वो जो कर सकता है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको वो करना चाहिए. बट अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जो बाद में हो सकती है, you should be able to talk freely to your parents and make them understand. If you're studying, then that time is for your studying, and maybe you can get to the task that they want later. But understand कि वो task later हो सकता है कि नहीं, कि अभी हो सकता है. And you it's always हर एक के life में there are many different priorities, and you always have to juggle them. And it's not always easy to find a balance between your various priorities, but you have to always strive to do that. And also communicate करना बहुत important है, क्योंकि आपको कभी बोल सकता है like I'm a working person, I'm a mom, I'm a a daughter-in-law, etc. I have a lot of different things that I have to do. And so you sort of have to find a balance in your life and juggle your various priorities. And if someone asks you to do something, it may be very important to do that right away. But if it's not, then you can talk to the person and say, can I do this later? Can I do this at a different time? And talk about that. May I request you to type these habits in the end so that we can check them out? Absolutely. I'll type it in the end, but these are 7 habits of highly effective people, is what it's called. They were formed. It's a book. These are courses that people take. Students take these courses. People who are in management take these courses of these 7 habits, and they do exercises around them. But Stephen Covey है जो author था and who came up with this concept. It's a very interesting concept and a very effective concept. मैं actually उमर से बात कर रही थी before you all got on the call. कि मैंने बहुत सारे workshops attend करते हैं ये वो, and sometimes you take some things away from a workshop and sometimes you think I don't know if it was the best use of my time. But this workshop I attended maybe 15 or 16 years ago, and it really changed my life, because तब तक मैंने ऐसे organized way में अपने बारे में नहीं सोचा था. और उस time पर जब मैंने ये attend किया, there were so many different priorities in my life, and it really helped me sort out मेरे goals क्या हैं, मुझे कैसे proactive बनना है, मुझे कौन सी habits form करनी है, मेरी life में important क्या है, क्या urgent है, and then how I can become a better person and how I can help my personal growth by listening more to people rather than speaking all the time. And there are the other habits that I think we can do a round 2 of this workshop and cover those there. Another one of these habits that I like very much is sharpening the saw. जैसे आरी होती है जिससे काटते हैं wood, तो वो blunt हो जाती है over time. तो वुड कटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके जो वो दांत होते हैं वो हमेशा शार्प हो. इसी तरह जो इंसान का दिमाग होता है वो भी ओवर टाइम जो है it starts to dull with. So it's very important, whatever आपकी एज ऐसी है कि आप लोगों का बहुत शार्प है दिमाग, you can absorb, you really like sponges right now, which is great. But you'll see over time it becomes अभी आप उस मोड में हो जहाँ आपकी लर्निंग है, you're only learning.
But when you come to a time when you're doing what you learn, it's important then to continue to learn again, to learn, to keep learning, to read, to be aware, to read newspapers. Very, very important to keep that saw sharp at all times. So I'm going to answer these two questions, and Umar, I think uske baad we can let's see. Sometimes you compromise with your goals. Oh, wait a minute. Sorry, I think if it is very, very tough to leave a bad habit and there's no chance to forget it, so what to do, ma'am? I don't think there's anything as no chance. There's nothing as no chance. People overcome extremely bad habits. कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है. जैसे मैंने आपको बोला, आपको लगता नहीं है लेकिन आप बहुत अडेप्टेबल हो. Every human being is adaptable. Every human being can adapt to a new situation, right? The whole world right now has adapted to a completely different way of living. कोविड की वजह से हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम you know 3-4 महीने अपने घर में बंद रहेंगे. I mean, I guess it doesn't apply to Kashmir क्योंकि वहाँ होता है, but the entire world. लेकिन people had habits, people were doing different things. People had habits of going for a cup of coffee or going to restaurants or going this and going to work. All that changed and people adapted, and nobody is, थोड़ी बहुत सबको problem हो रही है, but the world is going on. People are working, वो सब चीजें हो रही. So there is human beings की adaptability बहुत ज़्यादा है, और इसका आप फिर से try करो. Again I said, अगर वो habit break नहीं हो रही है, आपको अपने लिए पहले understand करना है कि आप क्यों वो break करना चाह रहे हो, वो आपको कैसे harm कर रही है वो habit. Once you understand that, give yourself time, and you may fail once, you may fail twice, but you have to keep at it till you get rid of that bad habit. Sometimes you compromise with your goal that is obviously important to you for something that is also important. In that case, how can we differentiate what is more important and when we are totally helpless? So I think a lot of people are faced, it's very common in life to be faced with two choices that you have to make, and both things seem important, but you either have the time or you only have the capacity to do one of those two things. I think what helps me in those situations is really writing it down, writing a list of the pros and cons of doing one. एक करने के लिए क्या pros हैं, क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं. What are the good things about this particular thing? What are the good things about that particular thing? What are the cons and the downsides of doing that? I think if you do that with the choices you have to make, and it still may be a difficult thing to do, but analyzing that, writing down the pros and cons of each, and holistic, आपके लिए pros and cons, and the person, maybe there's a person involved in it or your family involved in it, उनके लिए pros and cons क्या होंगे, it might help you to think with more clarity at that time. मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए. And then there are also times when you can perhaps do एक चीज आप completely कर सकते हो, maybe दूसरी चीज आप completely नहीं कर सकते हो, but if you if you are able to do it in a way कि आप किसी चीज का दूसरी चीज का कोई हिस्सा कर सकते हो या time या capacity की वजह से, so you can at least try and do that. But if it's a decision between 1 and 2 and you have to make it, then I would make a list of pros and cons. And as somebody who's a rebellious nature, you always, it's not. I think, I think I would not be hard on yourself to think कि आप किसी चीज को try कर रहे हो या किसी habit को break करने की कोशिश कर रहे हो, नई habit form कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो आप बहुत rebellious हो. एक चीज आपको रियलाइज करनी है कि आप आप लोग अभी जो हो, आप मैच्योर हो रहे हो, और जो विद लाइफ विद एज जो वो ठहराव आता है, तो उसमें फिर ये जो हैं ये चीजें इजी होती जाती हैं, राइट. सो आप इस बारे में बहुत फिर
सोच सकते हो clarity से, and then you can do it. But I don't think you should think that, you know, you're a rebellious person, so you can never find, you know, form a good habit. You absolutely can do that, and you, like I said, you have to reason with yourself. You have to talk to yourself, and you have to ask yourself, why am I doing this? The why is very important. Unless you don't answer and convince yourself of what that why is for you to do it, तब तक जो है, you don't have a good chance of succeeding in it. Is it always good to stick to your habits, or good to uh, or is it good to listen to sometimes who are more experienced? You know, it's uh, I think, you know, you form a particular habit because you've thought about it yourself, right? And it's what is good for you may not be good for another person. It's always good to learn from other people's experiences, to talk to them, to understand why their habit might be different from yours. But in the end, I think you have to make a decision for yourself, and not let it be influenced just because a person is more experienced, and they must always know better. Of course, you can try to learn from them, but if your heart is telling you, and you're telling yourself, and it's something that you've decided with yourself that this is helping you accomplish your goals in life, and that's a good habit, and you should stick with it, then you should stick with it. But you should always try, listen, understand from other people's experiences, and then make the decision. Stephen says in Seven Habits of Highly Effective People, the way to see the problem is the problem. The way to see the problem is the problem. Ma'am, please comment in Stephen's vision. Is this the book recommend? Yeah, I'm not really sure what this means. The way to see the problem is the problem. I think it means if you approach a problem with the thought that you might not be able to solve it, or you think you know it's too big for you to handle, etc., then that might be a problem. I'm not sure, Danshi, exactly. Yeah. Sorry, Soras, I would maybe like to add to that. So I think जो basically प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ के लेना इज व्हाट यू नो आई सी दिस थिंग कि आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे, थिंग्स विल बी इजियर। आप इसको पॉजिटिव अप्रोच से सॉल्व करने का एक अप्रोच बिल्डअप कर सकते हो। सो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी, देखो अभी जिस फेज में आप सारे हो, या इनफैक्ट हम जिस फेज में हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है। जिंदगी कभी प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं रहती। सो यू ऑलवेज हैव problems in life, but the approach needs to change. You have to see them as opportunities. तो आप जब तक उसको opportunity नहीं मानोगे, आप उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म ही नहीं बिल्डअप कर सकते अपने अंदर। so that was just a quick comment, and आप please continue. Thank you, Umar. That was very nice. Yeah. So the way we see the problem is the problem, right? You know how we are thinking about it. If there is a problem or a concern or something in your way, it is, as Umar also said, it could be an opportunity. So how do you look at it? Do you look at it as a negative, or do you look at it as an opportunity to be able to take yourself and apply yourself to resolve it, to make it better? In this line, he simply says how to take your problems and obstacles in your life, right? Because there are always going to be obstacles, always going to be problems in life. And how do you approach them? How is it is what really matters. And you've asked, is the book recommended? We are young, and what's the best use of it? जैसे मैंने beginning में बोला, what I like about this book and what I like about these habits are that they are absolutely universal. They apply to every situation. They apply to they can apply to every human being. चाहे आप student हो, चाहे later in life you're trying to manage people, or
even manage a household, manage relationships between various members of your family. ये जो ये जो general rules हैं, इनकी applicability आपकी particular situation की case से है. So yes, I would say absolutely read the book and you know, and more importantly, you know, think about, you know, I think in the book वो हर habit के बाद paradigm की बात करते हैं. Paradigm means आपका नजरिया, right? And how it can, how you have to shift your paradigm to be able to think about that that problem, or sorry, that habit. You know, like for when you said be proactive, are you going to say, they say, are you a product of your circumstances? Are you going to be a product of your choices? And what you want to be is a product of your choices. So for each habit, take some time and read about that paradigm. जो आपका नजरिया है, उससे जो है आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि क्या है ये हैबिट्स और आप अपनी लाइफ में कैसे accomplish कर सकते हो. Why is a positive attitude considered a key to success? A positive attitude is because, like I said, in everyone's life, no matter who they are, what their circumstances are, they are going to be faced with hurdles in life. They are going to be faced with problems in life. And if you have a positive attitude, you don't give up. You find a way. You say, what are my options, instead of saying, these are the circumstances, I can't do anything about it. And it gives you the inner strength. You know, it gives you the strength to, if you have a positive attitude, then you tell yourself, I can overcome this obstacle. I can overcome this problem. I can take this problem and make it into an opportunity, right? So it's very, very important to have a positive attitude. And you've seen, you know, there are even examples of people who are very sick sometimes, you know, बीमार हैं बहुत. अगर आप बीमार इंसान छोड़ देता है, you know, to fight करना, their body stops fighting, right? But if a sick person is able to have a positive attitude and say you're able to overcome, there are positive impacts on your body. So it's very important to have a positive attitude. I didn't answer Sabura's question. I have a bad habit to sit all the time in my room because my parents think it's not good for a girl to go anywhere, but my friends told me it's not good for you. What should I do? I think, you know, Sabura, I'm not sure, you know, I think if your parents have certain rules in the household, those are, you live with them, they at this age sort of have control over your life. So you have to stick to those rules. And again, everybody's situation is different. You know, there are some parents who might think it's okay for their children or their kids to go out at a certain time. Your parents might think that it's not the right thing to do. Everybody's situation is different, and you can't say उनको जाने दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं. Although all teenagers go through this, all teenagers and young people go through this. What I would say is आप अपने parents के साथ communicate करना सीखो. I think हमारे culture में थोड़ी कम है communication parents के साथ. I know आपकी generation में वो बहुत improve हुआ है. हमारी generation में तो हम बहुत कम बात करते थे ऐसे topics के बारे में. You know, we would be told नहीं जाना है, उसका मतलब होता नहीं जाना है, ये खाना है, ये खाना. I think आपकी generation जो है वो question करती है चीजें, और as long as you are questioning respectfully, you are talking respectfully, I think that's very good. You can maybe reach a compromise with your parents, where your parents go, or your mom goes out with you, or your father goes out with you, or you go out with an elder brother or an elder sister, and they might feel comfortable that way. But I really think as long as you're living in your parents' house and they have rules, I would say my advice is to always follow those rules. I think you know, and if there is something that you think बहुत unreasonable है, मुझे याद है बहुत अपने parents के साथ
आर्ग्यू किया है चीज़ों में. जैसे मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो हमारा गोवा का ट्रिप था and my parents didn't want me to go, but I talked to them, and you know, I understood sort of their concerns and their point of view. And your parents' concerns may be valid. You know, they have always concerned about your safety, about your well-being. आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं वो usually आपकी well-being, you know, they have that in mind, and it's nothing else but that. And sometimes when you're a teenager it's very hard to understand that. लेकिन इसका बेस्ट वे ये है कि आप समझो, उनसे बात करो वो क्यों बोलते हैं, और if there is a way where they would feel comfortable, then you know, then that can be a compromise. Ma'am, your question, and then Seerath also wanted me to answer Sabura's question, so I've done that. So I think Seerath, did you want me to ask? Did you have the same question in mind? I think Umar, is that the end of the questions? Yeah, for now I think इतने questions. सबूर कुछ पूछना चाहती है basically. अगर सबूर, if you want to question verbally, आप unmute करके एक बार पूछ सकते हो. तो यही क्वेश्चन था सबूर का, राइट? आपका यही क्वेश्चन था. Okay. So Yeah. Sabur, I would also say, sorry, that you know, it's not you have a habit to sit in your room all the time, because it's not. But you don't always have to sit in your room and do nothing. You can find interesting things to do, and you can interact with your family, and you know, sometimes you sort of forget to do that. And I think instead of maybe sitting in your room and distancing yourself from your family, it's better to try and build a better communication with your parents and spend more time with them and help them understand you and have confidence in you as a person, as a human being, as a girl, and understand their point of view also. And I'm really hoping that you you know, reach a compromise where they'll be comfortable also, and you'll get to do a little bit of what you want as well. Type these habits. Okay, I'm going to do that. Habit 1 is be proactive. Habit 2 is begin with the end in mind. Habit 3 is first things first. Habit 4 is think win-win. इसके बारे में हमने बात नहीं की, मगर अगली बार इंशाल्लाह we'll talk about this. This is a very interesting habit. And habit 5 is what we talked about, seek first to understand. See, so this is going to help you. If you seek first to understand, then be understood. When you're talking to your parents, understand their point of view and their perspective, and then tell them yours. Synergize. We didn't talk about this one. And the last one, which I like very much, is sharpen the saw. There we go. 7 habits. Okay. I hope you all took away something good from this session. And जैसे उमर ने आपको मेरा email address दिया, I'll type it here again. If you have any questions, please मुझे email लिखिए. I will be happy to answer them. All right. Thank you very much
for listening to me and for all your wonderful questions. मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि आपके questions बहुत thoughtful होते हैं, and you all exhibit a maturity that surprises me pleasantly all the time. And I wish you all the best. And inshallah, hopefully, फिर एक बार, I'll try to do a session and see you guys again. Yeah, thank you so much. Basically, so we had Fayaz Sahab also was a call for the whole time. Thank you so much, Fayaz Sahab. But I would like to mention scholars एक चीज ध्यान से आप सब सुने कि ये बेसिकली हम जो 7 हैबिट्स की बात आज हो रही थी उसमें से हमने कंप्लीट नहीं किया. तो दूसरा ये चीज भी है कि एक तो मे बी यू कैन टेक दैट एज एन असाइनमेंट, वो 2 चीजें, क्योंकि हमने बुक भी आपको प्रोवाइड की है. अगर आपको पेन ड्राइव में देखा होगा वो जो मोटिवेशनल बुक्स है उसमें ये वाली बुक भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं. बट दूसरी चीज ये भी है कि जो मैम ने 5 बताई बट आप 2 खुद भी देख सकते हो. बट हाँ, हम 1-2 हफ्ते बाद कुछ हफ्तों बाद फिर से इनके साथ सेशन करेंगे, तब इस पे भी बात होगी. बट थोड़ा सा अपने एंड पे ना अपनी जगह पे इन पे वर्कआउट करना है. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये बुक से बहुत फायदा हुआ है मेरा, एंड आई एम श्योर मैम का हुआ है फायदा इससे. और ये हैबिट्स आपको भी बहुत बेनिफिट करेंगे. अगर आपको इसकी बुक भी चाहिए, अगर किसी को नहीं मिल रही उसमें, प्लीज रीच आउट टू मी, मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा. बट कीप दिस इन माइंड कि ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी. सो आई थैंक यू ऑल कि आज हमने सवेरे आपको जगाया संडे के दिन, तो आप सबों का और बड़े डिसिप्लिन के साथ. सो आज एक चीज है कि आज आप सबको गुंजाइश है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बट ध्यान रहे पीछे से कोई नहीं होना चाहिए चाय वाय के लिए बुलाता हुआ. तो आप मैम को वर्बली आज थैंक यू कर सकते हो सारे. मैंने अनम्यूट किया सबको अब. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It was very helpful session. So much, ma'am. Thank you so much, ma'am. It is very helpful, ma'am. Thank you so much, ma'am, and Umar Hafiz sir. चलो, थैंक यू सो मच शिवा, एंड थैंक यू सो मच everybody. रुखसाना ने मुझे कुछ लिखा था, you didn't reply. Okay, रुखसाना, just give me a sec. रुखसाना, I just missed her. Okay. Sir, how can, okay, रुखसाना ने एक सवाल लिखा है lastly, how can we sharp our mind more and more? Okay, just a sec. हाँ रुखसाना, बेसिकली मुझे पता था शीबा हैज लेफ्ट. सो बेसिकली जो शॉप इन द 100 वाली बात हो गई, उसमें द बेस्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज, जो भी चीज है देखो, हमेशा अपने आप के साथ कंपटीशन सेट करना चाहिए. यू डोंट हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड बट विद योरसेल्फ. और अपने साथ compete करने का ये चीज है कि आपने जो चीजें पिछले साल तक आप जान रहे थे, वो आपको ये अपनी जगह पे ट्रैक रखना होता है कि मैंने इस साल नया क्या सीखा, मैंने अपना आप पिछले साल से बेटर कैसे बनाया. दूसरी चीजें ये भी, फॉर एग्जांपल आप मानो राइटिंग वाला एक स्किल लेते हैं, कि आप ये देखोगे पिछले साल तक मेरी राइटिंग में कितनी अच्छी वोकैबुलरी थी, कितने नए वर्ड्स में यूज करती थी राइटिंग में, तो इस बार मैं कौन से नए वर्ड्स यूज करो. सो आप पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से एरियाज में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, फिर उसका एक ट्रैक रखो, और उसके लिए साथ साथ में रिहर्स. जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए रीडिंग आपको करनी जरूरी है. तो जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, आप नए वर्ड्स नहीं सीखोगे, नए वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप राइटिंग में वो वर्ड्स यूज नहीं कर सकते और अच्छी राइटिंग नहीं कर सकते. सो देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस. तो आपको रिकॉग्नाइज करना है मुझे किस किस एरिया में जाना है और उस एरिया में इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है. That way you can sharpen yourself, कोई भी स्किल हो, कोई भी चीज हो. So I hope that answers your session. So with that I would like to thank everybody. We have Fayaz Saab with us. I would like to thank Fayaz Saab. And Fayaz Saab, if you quickly want to say something, please. आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो please आप बोल लीजिए, then we'll end the session. Thank you so much, Sheba ma'am. Thanks so much for your time, and thank you, scholars. बहुत अच्छा session था. I really appreciate it. Thanks so much. Okay. Shukriya, Fayaz sahab.
Thank you, everyone. Allah Hafiz. Stay safe.